First, we will revisit our last lecture. Actually, it was very informal in the beginning, so let's make it a formal one. What we did in the last class. So this is the two type of AM DSP and DSPSC, which you have seen before the midterm, right? And then after the midterm, we discussed single sideband AM or single sideband. It can be either only USB or lower sideband. So before going there, before discussing the single sideband modulations, we saw that, so anyone who has checked this? So the any filter with impulse response 1 upon pi t is called a Hilbert transformer. And the Fourier transform of 1 upon pi t is minus j sine of f, where sine of a function x, can anybody define? What should I write if x is greater than 0? What should be the value of sine x? 1. Great. And if it is 0? 0. Minus 1. Great. So this is the definition of a sine function. So of course minus j sine f, you can simply plot like this, minus j. So this thing we discussed. The proof I think you know. And we also discussed that what happens when cosine function meets Hilbert transformer. It means when we pass a cosine signal through a filter whose impulse response is 1 upon pi t, the output of this filter would be sine of 2 pi f c t. So this is the meaning of this statement. Correct? Then we will use f only for everywhere. So if this is the spectra, this is the spectra of any message signal which you want to transmit. So double sideband suppressed carrier, if we use double sideband suppressed carrier type of AM modulation in order to transmit this message signal MT, then it will be MT cos 2 pi f ct, so which is nothing but in frequency domain, it will translate, right? You will translate it in both positive FC and negative FC. So this is the spectra of a double sideband suppressed carrier signal. But any double sideband signal contains both lower sideband as well as the upper sideband. So these are the lower sidebands and these are the upper sideband. So what is the lower sideband? What is the frequency range of the lower sideband? If this is FM, minus FM and FM. So if I ask you what is the lower sideband frequency range of the lower sideband signal? Lower sideband means minus FC plus FM minus FC2, sorry, minus FC
2 minus FC plus FM and union this is the right. So FC minus FM, FC minus FM2, FC plus FM2. So this is the LSB, and the frequency component, frequency content of the upper sideband will be similarly. Can anybody tell me? It's very straightforward. FC to FC plus F. Correct? So we see that all the message signal, all the information is available in both LSB or USB. So in DSB, we are transmitting both the frequency components. So it is unnecessarily wasting our bandwidth. Okay, so this is just an explanation of how to get the spectra of a double sideband suppressed carrier signal. I hope it is clear to all of you, right? Why we are using here convolution? Aditya? Sir? Why I am using here a convolution sign? So because multiplication in time domain would be convolution in frequency. Correct. So this is, I hope this is very straightforward. So this is the explanation of what we have just written, right? The LSB is this, the USB is this. And if we know the LSB, we know the complete signal, right? Or if we know the USB, we know the complete message signal or information signal. Since LSB is equivalent to USB. So in order to do bandwidth saving, we can use a frequency discrimination method, right? Or a filter method. We can put filter and we can filter out the lower sideband or the upper sideband. So if we are interested only in upper sideband, we will put a filter in such a way that the upper sideband lies in the passband region of the filter and the lower sideband lies in the, this thing I missed in the last class. I mean, though it was obvious, but for the sake of completeness, the LSB should belong to the, what should I write here? Stop band. Stop band region of the filter. Though any filter has three regions: pass band, stop band, pass band, and this is the transition region, right? Any practical filter will have three regions: pass band, stop band, and the transition region. But any ideal filter theoretically have only two, right? But all the practical filters will have this type of transition. That is why we will not get the perfect LSB or USB in practice. Correct? अच्छा अब चलो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. If one second. Today's my drawing is not very good. This is a double sideband signal. This is the spectra of a double sideband signal. And I'm interested in passing the, I want to generate a AM, SSB, and LSB. So what should I do? And we are interested in filter method, a frequency domain. So what type of filter should I use? Low pass filter. Low pass filter. So how should I plot its frequency response? So from FC minus FM से ऊपर से लेके वो. ऐसे कर दूं? No, हाँ, yes sir. So this is your low pass filter, right?
वैसे तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में होगा, बट ऑफ कोर्स एनी फिल्टर विल हैव द replica because it's a real signal, right? So this will be your, the yellow one will be your low pass filter. The frequency response, the spectra of your low pass filter would look like this. Okay? Ideally, though it will not be ideal, so it will have this type of transitions. Of course, it will be, you will not get the perfect USB. Okay, so you can generate AM, SSB, LSB, and you can also generate AM, LS, SSB, USB, which we have discussed explicitly in the last class. I did not discuss this thing explicitly, so just for the sake of completeness, it was required. So yeah, now we will just see the block diagram. How would the block diagram of this would look like, right? So this is the box which will give you the output DSB-SC, and which will, if you want to generate AM SSB with USB, you will put a high pass filter with some cutoff frequency, right? Okay, if you put a cutoff frequency of FC, how would your signal look like practically? थोड़ा करके देखें, पॉजिटिव वाले को ही देख लेते हैं. We'll just focus on the positive side. अभी यहाँ पे हाई फिल्टर लगाओ, हाई पास फिल्टर विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, आई मीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी. ऐसा होगा, राइट? If this is your cutoff frequency, it means ideal filter would look like this, right? Cutoff का क्या मतलब होता है? क्या होना चाहिए यहाँ पर वैल्यू? अगर यहाँ पे 1 है तो कुछ √2 वाला याद आ रहा है क्या? So 1/√2. Great. तो आपके पास क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रा जरा सा प्लॉट करो, देखो. Your one second. It will depend on the characteristic, right? So if your filter would is like this, then this signal will be passed with some attenuation up to this point, and then some, I mean, accordingly this will be passed, right? With some attenuation. So you will not get a very clear USB, but some vestige. You will also get some vestige or some part of the LSB, right? Practically. So we saw this is the problem. That's the very sharp cutoff characteristics are required if we want a pure AM, SSB, LSB or USB. So there was one more method which we have discussed, that is a phase shift method or the Hilbert transform method. So in Hilbert transform method, this was a little messy last time, so we'll just correct it. कोई मुझे स्टेप्स बता सकता है easily? The first branch, the upper branch will have the same signal, the double sideband suppressed carrier signal, and we call it XCT. We denote it by XCT. And the second branch or the down branch would contain this message signal, which is first passed through the Hilbert transformer, and then it is multiplied with the sinusoidal carrier. We call it XST, and then at the output, we either subtract it or we add it. When we subtract it, what we will get? The upper sideband USB. Great. And we when did the addition, we'll get the LSB. You can remember it like this.
L सब्ट्रैक्ट ऐड, ठीक है। L है ना, ये L है और फिर ये भी है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, प्लस हो गया, राइट। सो द एडिशन विल गिव यू LSB। सो टाइम डोमेन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा बताओ। बताओ x SSB, अगर तुमसे बोले ओके योर प्रोफेसर हैज टॉट यू x SSB, then how should I write it in terms of, now your objective है कि write this signal in terms of MT and the cos and sine. कैसे लिखोगे बताओ। और LSB लिखना, चलो SSB LSB बताओ। MT into cos 2 pi FCT ग्रेट, plus LSB plus हाँ, M cap T ग्रेट into sin 2 pi FCT. ग्रेट। तो मैथमेटिकली योर SSB सिग्नल यू कैन राइट इट लाइक दिस। और फ्रीक्वेंसी में कैसा दिखेगा, if this is the, if somebody asks you if this is the Fourier spectrum or if this is the spectra of your message signal, then how the spectra of your SSB LSB would look like? So shifted on single side. Great. So since it is LSB, right? So lower sideband, like this. Yes, sir. Okay. So this is the spectra of this signal. Okay. Spectra of this. And what should I write here? Correct. What should I write here? Correct. Similarly, you can do it for the USB. Correct. What you have to do, you have to just replace it with the negative sign. It will become USB, and your USB would look like this. ठीक है, वो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, but it is not up to the scale, so you can do it. और ये एम्पलीट्यूड कितना होगा इनका? By 2, 1 by 2. याद करो फिर से, 1/2 जुड़ गया था शायद, क्योंकि cos से भी 1/2 आएगा, sin से भी 1/2 आएगा, राइट? Yes, sir. इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, Yes, sir. तो 1 हो जाएगा, राइट? If whatever is the amplitude of this, it will be the same as this. If it is 1, it is 1. If it is alpha, it is alpha, right? If it is 2, it will be 2. So इसको अगर हम लोग पिक्टोरियली देखें, क्योंकि I mean if somebody says that this signal will give you this spectra, verify it. The next objective was, which we did, verify it. I'm just revising the whole class because it's good to revise it first. So just verify this mathematical equation that the spectra of this signal would look like this signal, the LSB, if you use plus, and USB if you use minus. So we did it in the last class step by step. So let's see if ये तो clear है, right? This is the spectra of your message signal, and this is the spectra of your cos 2 pi FCT. And why we are doing it a convolution? Because here we have multiplication, right? So the spectra of this signal would look like this. Correct? Next, what we have to do? We have to first Fourier transform. Hilbert transform. We have to find the spectra of m hat t. So the spectra of m hat t. अब इसके लिए बताओ क्या करें? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा? m hat t is mt convolved with 1/pi t, और Fourier domain में m hat f is mf multiplied with minus j sigma f. Correct? अभी क्लियर है?
वाई आई एम डूइंग मल्टीप्लीकेशन हियर, यस सो अल्फा यहाँ पे क्या होगा 1, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि 1/pt का है माइनस जे सिग्नल। ये मैंने बोला था कि चेक करने के लिए आप लोगों को। किसी ने किया क्या? Yes. हाँ, ये माइनस जे सिग्नल एफ होगा, राइट? सो वी मल्टीप्लाई इट, सो sometimes it becomes problematic. Yeah, I can hide it also. हाँ, तो ये है आपका, दिस इज द फोरियर स्पेक्ट्रा ऑफ द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर, एंड इन ऑर्डर टू गेट द spectra of this you have to multiply it, and after multiplication we have seen that क्या होता है, ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो एज इट इज, वो क्या होता है उसमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो चेंज, नेगेटिव में नो चेंज, पाई बाय 2 फेज शिफ्ट होता है, राइट? नेगेटिव कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ चेंज हो रहा है? जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो एज इट इज रहता है, मतलब पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव में, करेक्ट? हाँ वो अभी सही है? हाँ ठीक है, फिर इन दोनों को हमने साइन, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब इसका फोरियर स्पेक्ट्रा निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, एस एफ, अगर इसको मैं एक्स सी टी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो व्हाट वुड बी द स्पेक्ट्रा ऑफ एक्स सी टी व्हिच इज जनरेटेड बाय एक्स। In order to do that, we have to convolve the spectra of this signal with the spectra of sine 2 pi f ct. Agreed? Okay. And the spectra of sine 2 pi f ct we have evaluated in the last class. Is this correct? Yes. Confuse मत हो, इसको हटाओ, ये बड़ा। So this is the spectra of our sine 2 pi f ct, which we will convolve with the spectra of the Hilbert transform, output of the Hilbert transformer. And when we did it, we will get ये तो देखो नेगेटिव से है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट? और ये सेम रहेगा। इन दोनों को कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, दैट इज व्हाई इट विल बिकम दिस। ये क्लियर है कि मैं इसको फिर से करूँ, साफ साफ बताओ? क्लियर। Not only to you, all of you are okay with that? If not, just ask. सर एक बार फिर से कर दीजिए। हाँ, पूछो यार, उसमें क्या है। देखो ये है स्पेक्ट्रा ऑफ आउटपुट ऑफ द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, करेक्ट? इसको कन्वॉल्व करना है इससे, इम्पल्स से। द स्ट्रेंथ ऑफ द इम्पल्सेस आर दिस, एंड द लोकेशन ऑफ द इम्पल्सेस आर, यही दो चीज होती है देखो इम्पल्स में, स्ट्रेंथ क्या है और लोकेशन क्या है। एंड दिस इज द फोरियर्स ऑफ साइन 2 पाई f ct। अब मुझे बताओ, व्हेन यू कन्वॉल्व एनी सिग्नल विद एनी इम्पल्स, पहले इस इम्पल्स को देखो, you shift it at this location, correct? First you shift it at this location, तो ये 0 है, so माइनस एफ सी में इसको उठा के शिफ्ट करना है। अब फिर क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है ना, इसको तो माइनस अल्फा सोचो या माइनस पी सोचो, पहले माइनस हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, माइनस का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज लेना पड़ता है ना, प्लस 2 कैलकुलस, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस लेने से। अब फिर 1/2j से ये अकॉर्डिंगली इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेट हो जाएगा, करेक्ट? अभी क्लियर? इसका j है, एम्पलीट्यूड मैंने रखा नहीं, j था, ये माइनस j था, तो 1/2j से मल्टीप्लाई करो, ये j इंटू माइनस 1/2j, j इंटू माइनस 1/2j विल बिकम माइनस हाफ। सो पहला इम्पल्स जब करेंगे
सो अगर ये आपका दिस इज इफ योर माइनस एफ सी, सो दिस विल बिकम your first, if you convolve with the first impulse, this will become this, and ये आपका हो जाएगा माइनस हाफ और हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। सिमिलरली इसको ऐसे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव साइन होगा नहीं, बस मैं उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यू जस्ट शिफ्ट इट दिस वाइट वाले को, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 1/2, जैसे कि हाफ। So this is the Fourier spectra of the XCF, sorry XXF, that is the lower branch output. अब क्या करना था, दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना? सॉरी XFF और XCF क्या था बताओ मुझे, ये था, चलो अलग पेज पे कर लेते हैं। अब दोनों को ऐड करना है, ये था तुम्हारा XCF, ये है तुम्हारा XSF माइनस FC, FC हाँ, अब इन दोनों को ऐड करो जरा, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट ये तो कैंसिल हो गया इधर वाला, तो क्या बचा, ये FC था, ये माइनस FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM, अकॉर्डिंगली ये क्या होगा बताओ, FC ये क्या होगा, ये क्या होगा था FC प्लस FM, ये है FC माइनस FM माइनस FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM। तो यहाँ पे बताओ कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस FC2 माइनस FC प्लस FM, और यहाँ क्या बचा FC माइनस FM2 FC। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर X AM, बताओ SSB LSB कैपिटल का स्पेक्ट्रा, राइट? दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ AM SSB LSB एंड हेंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना था ना हमको यहाँ पर, करेक्ट? तो सिमिलरली यू कैन डू फॉर द USB बाय फॉलोइंग द सिमिलर स्टेप्स, बट आपको बस क्या करना है, निगेट करना है। तो यहाँ पे एक बार नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा वो। सर हाँ बोलो सर, सब्ट्रैक्ट तो हम USB के लिए करते हैं ना, हाँ, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके LSB निकाला। अरे सॉरी ऐड किया, सॉरी या मैंने प्लस है बोल दिया नेगेटिव, वी हैव टू ऐड इट, राइट? वी हैव जस्ट एडेड, सी ऐड किया ना, तभी तो ये इससे कट गया, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हाफ है। यस सर। तो ये 1 1 हो गया, अभी क्लियर? वो pardon me for that. So we are adding, so if we add we will get the LSB, right? क्लियर हो गया अभी एवरीवन? यस सर। यस। तो अभी आप लोग स्पेक्ट्रा आराम से निकाल लोगे, तो हिल्बर्ट मेथड का भी स्पेक्ट्रा निकाल लोगे, और फिल्टर मेथड तो आप लोगों को आता ही है इजीली। तो अभी हम लोगों ने नेक्स्ट सोचा था कि इसको डिमॉडुलेट कैसे करना है, क्वेश्चन ये था। तो बताओ इसको डिमॉडुलेट कैसे कर सकते हैं, DSB में कैसे डिमॉडुलेट करते थे? सोचो थोड़ा सा,
सर आरसी फिल्टर, आरसी कॉम्बिनेशन से RC combination. डायोड, डायोड आरसी। That is called envelope detector. यस सर। वहां यहाँ पर ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो याद है वो एनवेलप डिटेक्टर कब लगाते थे? तो मुझे फिर गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। देखो जो एनवेलप डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो जब लगता था जब आपका रहता था विद कैरियर वाला सिग्नल, राइट? यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो। जब हम सिर्फ उसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तुम्हारे पास केवल एनवेलप है, तुम उसको डिटेक्ट करना चाहते हो, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा? कंफ्यूजन होगा आई थिंक, तो आई विल नॉट गो टू दैट डायरेक्शन। कभी जब क्लास ऑफलाइन लेंगे तो उसमें बता दूंगा। तो देखो अब इसको डिमॉडुलेट करना, एनवेलप डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा इसमें। पूछो क्यों? सोचना इसको, वो तुम्हें बताया गया है क्लास में तुम लोगों को कि एनवेलप डिटेक्टर में की कंडीशंस क्या होती हैं, उसी से म्यू आया था कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ओवर मॉडुलेटेड का कॉन्सेप्ट, अंडर मॉडुलेटेड का कॉन्सेप्ट, राइट? याद है ना? यस सर। ऐसे होगा या फिर योर सिग्नल वुड बी लाइक दिस। सो व्हिच टाइप ऑफ सिग्नल AM signal can be? If I give you this question, which are one of these two AM signals? This is AM with carrier. So, I mean, which one of these two AM with carrier signals can be demodulated using envelope detector? A or B? सर बी। B. And if B, why? And if we cannot demodulate first signal using envelope detector, then why? Justify. जब तुम एनवेलप डिटेक्टर में डालोगे तो क्या मिलेगा? इस सिग्नल को ये मिलेगा, और जब तुम इसको डालोगे तुम्हें ये मिलेगा। तो दिस इज योर मैसेज सिग्नल, सो यू आर सक्सेसफुली डिमॉड्यूलेटिंग योर मैसेज सिग्नल, बट हियर योर मैसेज सिग्नल वाज दिस, करेक्ट? वो तो केवल एनवेलप को देखता है ना, तो Yes, एनवेलप में ये है, तो इट इज नॉट, इट विल नॉट बी properly demodulate this signal. That is why envelope detector will not work for this. अभी समझ में आ गया? yes, sir. हाँ, यहीं से कॉन्सेप्ट आया था ना कि म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। ओवर मॉड्यूलेटेड है, ये ओवर मॉड्यूलेटेड है कि ये? विच ऑफ द AMWC is over modulated, A or B? A. A is over modulated. Why? Mathematically, how do you check? It's mu greater than 1 mixing order, sir. Yeah. So these are all of things are interconnected. Practically, if you will see, you will see that the output is this. Mathematically, you will see the mu is greater than 1. So you will simply say that it is over modulated, and hence our envelope detector will not be able to demodulate this signal. But this signal can be easily demodulated by the envelope detector, which is the combination of R and C. I don't know, remember which one of you told this, but envelope detector, that is why it is a combination of R and C. ठीक है? ऐसे चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर क्या होगा? चार्ज होगा, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, लेकिन ये जो कैप्चर करता है, ये फॉलो करता है, वो गलत सिग्नल को फॉलो करता है, बिकॉज इट इज ओवर। ठीक है, इसको देख लेना। हाँ, तो अब बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, हाउ विल यू demodulate AM SSB से? बोलो। पहले तो कैसे मॉड्यूलेशन किया था हमने, बताओ। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे किया था मॉड्यूलेशन? ऐसे किया था। अगर हम USB की बात करें, बताओ अब यहाँ पर क्या करें?
तुमको किसी ने बोला कि कुछ मैजिक करो इधर, कुछ ऐसा मैजिक करो इधर कि यू विल गेट एम्प्टी, यू गेट एम्प्टी बैक. दिस इज द होल पर्पज ऑफ डिमॉड्यूलेशन. दिस इज द मैसेज सिग्नल, दिस इज द कैरियर सिग्नल. हमारी मजबूरी थी ये सब करना क्योंकि देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज व्हाई वी डिड दिस. Then in order to save our half of the bandwidth, we used high pass filter at the transmitter. So here we get SSB, and now you have to do some magic so that you get your empty back at your receiver. बताओ, you are given a free hand, कुछ करो तो क्या करोगे? सोचो. यहाँ पे कुछ कॉस है, मल्टीप्लाई वगैरह करना. चलो हिंट देता हूँ. स्पेक्ट्रा के उसमें सोचो, इसका स्पेक्ट्रा कैसा था जो हमने यहाँ से पास किया था. कुछ यूएसबी की बात कर रहे हैं. तो ये ठीक है. अब इन दोनों को कुछ ऐसा करना जादू कि ऐसा मिल जाए. सोचो. शिफ्टिंग करना होगा. ग्रेट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जस्ट थिंक अगेन. देखो हमारा पर्पज ये नहीं है तुम्हें चीजें बता दें, बस सोचो. ग्रेट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सोचो. ये है FC. यहाँ पे क्या होगा पहले बताओ. FC माइनस FC. करेक्ट. कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों आपस में, अब देखो ये है तुम्हारे पास और तुम्हें चाहिए ये. करेक्ट. रेड वन चाहिए एंड यू आर हैविंग ग्रीन वंस इन फोरियर डोमेन, राइट. तो शिफ्टिंग करनी है. तो शिफ्टिंग हमको पता है कैसे होती है, इम्पल्स से मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी इन्वर्स से कन्वोल्व करने पे. इन्वर्स से कन्वोल्व करने का मतलब है कि साइनसॉइडल और किसी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा टाइम पे. करेक्ट. तो इससे मल्टीप्लाई करें इसको. कॉस से. सर कॉस से. जो मुझे पता नहीं है, तुम लोग जो बोल रहे हैं पता. सर फिर अपन लो पास फिल्टर यूज कर सकते हैं उसके बाद. देख तो नहीं रहे हो किताब, अपने मन से सोच रहे हो ना. यस सर. मतलब किताब देख के तो नहीं बोल रहे. सर क्योंकि पिछली बार भी सर ऐसे ही करा था जब सप्रेस कैरियर कर रहे थे. ठीक. तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ. पहले स्पेक्ट्रा में ही सोचो. ये स्पेक्ट्रा ग्रीन वंस आर अवेलेबल टू यू. ग्रीन में ही प्लॉट करते हैं. सो आप इसको कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा. एक तो 2FC में पहुंच जाएगा. करेक्ट. कि मैं गलत बोल रहा हूँ. किसे कॉस का ऐसा होता है, ये हम देख चुके हैं. जो स्पेक्ट्रा ऑफ अ कोसाइन सिग्नल इज लाइक दिस. So shifting of this by minus FC will take you to, this will become, ये माइनस FC से शिफ्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये FM हो जाएगा. और ये वाला उठ के -2FC में चला आएगा. ठीक है. और जब इस इम्पल्स से इसको कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा. ग्रीन वंस को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा. नए से करेंगे बताओ. नए पेज से करेंगे कंफ्यूजन होगा. बोलो. ये क्लियर हो रहा है. क्लियर है सर. क्लियर है ना. अभी ये अब इससे इसको कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा. सर नए पेज से करें. अच्छा ठीक. ये हमको रिसीवर के इनपुट पे मिला. AM SSB USB. दिस इज द स्पेक्ट्रा. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए. FC प्लस FM माइनस FC
minus FC. So what we are doing at the receiver, we are multiplying it with the cosine signal of frequency FC. It means in frequency domain, we are convolving it with this signal. This is the spectra of cosine, cos 2 pi. तो अब यही कर रहे हैं. तो when we convolve this signal with this, it will be shifted to minus FC and the amplitude will be scaled by half. तो ये उठ के कहाँ आएगा? -2FC में चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये FC हो जाएगा. तो when we convolve this signal with the first impulse, you will get this. This will be -2FC, and this will be -2FC minus F. And this will be FC and FC. अभी clear हुआ? Next, if you convolve it with the second impulse, it will be shifted to FC. So इसमें FC जोड़ो ना सब में. Shifted to FC means ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस किया था. सॉरी क्योंकि फर्स्ट में तो -FC हुआ था ना, तो ये 0 हो गया और ये FM. अभी क्या होगा बताओ? ये वाला शिफ्ट होगा 2FC में, 2FC प्लस FM, और ये वाला हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा FC और ये FM माइनस. तो आपको क्या मिल गया? मैसेज. और आपने हाफ से किया ना, तो हाफ हो जाएगा इसका. करेक्ट? मैग्नीट्यूड तो स्केल्ड हो जाएगा, राइट? हाफ हो गया. कभी हाफ था, लेकिन फिर दोनों का एडिशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ हो गया. शिफ्टिंग इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे. जब आपने किया था उसमें डबल साइड बैंड में, तो क्या हुआ था इसका मैग्नीट्यूड? हाफ. हाँ. तो अब इसको क्या पास करेंगे? किससे? हाँ, लो पास फिल्टर से. तो हमको क्या मिल जाएगा? MF. करेक्ट? तो अब बताओ, ये जो मैजिक बॉक्स था वो कंप्लीट करो उसको. You are getting this. So what would you do? You will multiply it with the cos 2 pi FCT, and then you will pass it through. So you will get KM. Clear? अभी तो क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. वैसे कई बार मैं ऐसे मैसेज सिग्नल, अगर ऐसा भी तो हो सकता है मैसेज सिग्नल आपका. मैसेज सिग्नल का वो तो पूरे ट्रांसफॉर्म कैसा भी हो सकता है, राइट? तो इसका USB ऐसा होगा. ठीक है, इट्स ओके. आई एम जस्ट सेइंग कि आप MF कैसा भी प्लॉट कर सकते हो. आई मीन मस्ट बी रियल ओनली, राइट? नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा MF ऐसा ही लो. यू कैन टेक MF लाइक दिस आल्सो. You can take MF like this also. It must be just, I mean, your message can change, right? This is your M1 and but after doing this, you will get the AM, SSB, USB-C. Sorry, गलत. ये तो AM हो गया ना.
यहाँ पर था AM, SSB, USB. And after passing it through this, you will get your empty bank, right? Half of empty. So, अभी क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर जब DSPSC कराया था सर, थोड़ा सा मतलब मैं नोट्स में देखा हूँ कि उसमें जो मैसेज सिग्नल है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो A के फैक्टर में आता है, और जो अपने साइड बैंड्स हैं उनका KA/2 ऐसा है सर। नहीं, हाफ से तो क्लियरली मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ना हमने किया था यहाँ। जब कोस यस सर। ऐसे ही करके देखना स्टेप बाय स्टेप, हाफ से तो इसका होना ही, अगर ये 1 है तो इम्पल्स हाफ के इम्पल्स से करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ से तो डिके होगा। ये सर वो सॉल्व कर रखा है, लेकिन जब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा तो उसमें जो मैसेज सिग्नल के साथ जो कोफिशिएंट आता है वो K आता है, और जो अपना शिफ्टेड वर्जन्स हैं उनका KA/2 आता है। हाँ तो शिफ्टेड वर्जन, ओह नहीं यार, इसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा है अब जब इसको हम शिफ्ट करेंगे FC से तो ये इधर पहुंच जाएगा, सॉरी -FC से, और ये इधर पहुंच जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड हाफ से स्केल होगा और इसका होगा। मुझे तो सही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। और क्लियरली हाफ ऑफ y ओमेगा is YF is half of, this is YF and this is XF and this is YF. Of course the Y of half of MP or whatever you are sending from here. If this is your AM USB signal of MT and this is your MF, then this will be your, हमने चेक कर लिया राइट। अगर प्रूफ कर लिया तो कहीं कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है, उसको भी एक बार प्रूफ करना, ठीक है। ये हाफ ऑफ MF हमको मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और जो आउटपुट ऑफ दिस डिमॉड्यूलेटर विल बी हाफ ऑफ MF which is in time domain half of MT. So the output of the demodulator is this. This is also known as synchronous demodulator. Why synchronous? Because we know the frequency here. We are just multiplying it. ठीक है, एक बार फिर पूछो तुम्हारा डाउट क्या था। तुम ये बोल रहे थे कि जो डबल आपने DSB/SC में किया था उसमें सर मैं समझ गया सर, उसमें जो डेरिवेशन है उसमें फिल्टर्ड आउटपुट यूज नहीं करा, इसलिए वो हो सकता है कि जो फिल्टर लिया है उसको, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है फिल्टर का, जैसे लो पास फिल्टर है राइट, हम ये लो पास फिल्टर लगा रहे हैं -FM to FM, करेक्ट? यस सर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको 2 कर दो तो वो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, या K कर दो। आई मीन यू कैन ऑलवेज एडजस्ट दी फिल्टर वैल्यू राइट, गेन मिल जाएगा, या फिर अगर 1 ही रखे हो तब हाफ ही मिलेगा। हमने तो केवल इसको पास किया। सर अपन ने इसमें FC से FC+FM लिया है ना, तो प्रीवियस केस में FC - FM से FC+FM लिया था, इसलिए वो डबल हो रहा था मैसेज सिग्नल। ये क्लियर है ये वाला जो? यस सर, यस सर। अच्छा, एक और तरीका, ये वाला पे क्लियर हो गया, डिमॉड्यूलेशन करना है तो कैसे करोगे? हमने यहाँ से किया, हमको ये मिल रहा था ग्रीन वंस, वी वांटेड द रेड वंस, so we first shifted and then we filtered out the unwanted components and we just preserved the wanted component, and by doing so we get the message signal back. ठीक है, अच्छा एक बार वो उसका ट्रांसमीटर बताओ मुझे कैसा था, AM SSB USB का ट्रांसमीटर कैसा था? सर डिफरेंस ये था, इसमें फिल्टर यूज नहीं करा था अपन ने, हाई पास फिल्टर यूज किया है ना। हो सकता है उसको देख लेना आप लोग, मैंने वो वाला सेक्शन आप लोग नहीं पढ़ा। यस सर, यस सर। तो ट्रांसमीटर क्या था हिल्बर्ट डोमेन में, बताओ एक बार जरा। हिल्बर्ट साइंस में
ठीक है. So now my claim is, if I have the similar box, and here if I give the input to this box, this signal back, the AM, SSB, USB, then I will get empty back. समझे मेरा क्वेश्चन क्या है? आपने यहाँ पे empty दिया तो आपको आउटपुट you were getting the output as the AM SSB. But if you give AM SSB as the input to this box, your output will be empty or some factor of alpha types. Scaled version of empty. Can you prove that? If my claim is, if I give this as the input, now this is your new input to this box, and you apply all the operations. टाइम मुझे बता देना अपना जब हो जाए. So you will get the empty back. Scaled version of empty. You will get the scaled version. Can you prove that? Can you see, at least verify whether I am right or wrong? इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर यहाँ पर क्या मिल रहा है, फिर दोनों का ये क्या है? ये है XIT cos 2 pi FCT, और ये क्या है? जो भी इसका हिल्बर्ट आएगा, XI हिल्बर्ट T XI at T sin 2 pi FCT. ये तो निकाल लोगे, ये और ये. बस निकाला. बताओ क्या होगा? MT cos स्क्वायर 2 pi FCT प्लस sin 2 pi FCT into cos 2 pi FCT. सिमिलरली यहां पर क्या होगा? पहले इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ? XIT का. This is your nothing but AM SSB, और तुम सेम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो, सेम बॉक्स यूज कर रहे हो. You should not call it transmitter now. The box is same. ये क्या होगा बताओ? इसको जब पास करते हैं हम तो कुछ बताया गया होगा तुमको. MT cos 2 pi FCT का क्या होगा? हिल्बर्ट MT sin 2 pi FCT, करेक्ट, माइनस ये तो क्लियर है ना? yes. ये यहाँ पर दिस इज द XI at T. अब इसको साइन से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. MT sin स्क्वायर 2 pi FCT माइनस M cap T sin 2 pi FCT cos 2 pi FCT. ठीक है, देखो यहाँ तक. यहाँ पे क्या मिला पता है? सही है, क्लियर है? यस सर. साइन से मल्टीप्लाई किया, sin 2 pi FCT इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला. अब इन दोनों को जरा ऐड करो. ये वाला कंपोनेंट कट रहा है, और द फर्स्ट इज MT cos स्क्वायर 2 pi CT प्लस sin स्क्वायर 2 pi FCT. दैट इज MT.
मिल गया एमटी? क्लियर करें इसको फिर से, बताओ, साफ साफ करें, बोलो, चलो साफ बताओ, फिर से करें। यस सर, तो cos square plus sin square. ठीक है, फिर से करें। XIT cos 2 pi FCT, which is the output of the first branch, that is clear. This is clear. MT cos square 2 pi FCT plus cos 2 pi FCT into sin 2 pi FCT. Now we are interested in finding the output of the lower branch, that is this. So first we have evaluated what is your xi tilde t. Xi tilde t is mt sin 2 pi FCT, because when your this signal passes through the Hilbert transformer, what happens? Cos becomes sin and sin become cos. अब ये वाला कुछ नहीं रहता, सेम ही रहता है, करेक्ट? ये तो बताया गया है, तो I know this thing is told to you in your class. Sin 2 pi FCT. अब क्या किया, इन दोनों को ऐड करो, लास्ट स्टेप यही ना, इन दोनों को ऐड करना। तो क्या मिलेगा आपको? mt साइन स्क्वायर, अच्छा इसको अभी साइन से मल्टीप्लाई करना है, इसको साइन से मल्टीप्लाई करो पहले, अब इसके साथ ऐड करो, second term will cancel out and the first will be mt cos square 2 pi FCT plus sin square 2 pi FCT, and from this identity we know sin square theta plus cos square theta is equal to, यहाँ पे mt मिल जाएगा, अभी ठीक है? So same box you can use in order to generate the SSB signal. टाइम क्या हो गया बताओ? 12:01। आंसर 12:01। 12 बजे। अभी हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट, तो सोचो और कोई अगर इसमें डाउट है, नहीं तो फिर क्यूसी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एसएसबी का जनरेशन यूजिंग filter method and the Hilbert transform. Also, we studied demodulation using synchronous detector, synchronous demodulation. That is nothing but multiplication of this with cos 2 pi FCT and then passing it through low pass filter. And also we studied the demodulation using the same Hilbert transform wala box. That Hilbert transform का जो ट्रांसमीटर था, उसके इनपुट पे देते हैं अगर AM, SSB, USB। अभी हमने क्या किया था यहाँ पे? USB दिया था, LSB दिया था, LSB दिया था, LSB मल्टीपैक। तो पूरा बॉक्स अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? MT you have a box, Hilbert transform wala, you get the AM, SSB, USB, and then you use the same box. Now it will act as a demodulator and you will get it. ठीक है? तो क्लियर हो गया? ये फिगर क्लियर है ना कैसे हो रहा है? Yes sir. This is your transmitter and this is generation and this is demodulation. So we are saving the bandwidth if we are using single sideband type of AM modulation, but we are losing in terms of the complexity at the transmitter end as well as the receiver. You can see that. रिसीवर एंड में तो अगर हम सिंक्रोनस मेथड यूज करें तो आई थिंक सिमिलर हो जाएगा, बट ट्रांसमीटर एंड में ऑफ कोर्स आपको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ से आप ऐसे जनरेट कर रहे हो, दूसरा एक मेथड, दिस इज ऑल्सो वन अदर मेथड टू जनरेट द लो पास SSB लो पास फिल्टर से LSB मिल जाएगा. Then you can do two things. You can either multiply it by cos 2 pi of ct, and then you pass it through the filter, or you can put this to here. Similarly, you can do this. Theoretically, at least, right? Understood what I am doing? देखो दो मेथड थे जनरेशन के, दो मेथड थे डिमॉड्यूलेशन के. तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? एक इसको यूज करके इससे डिमॉड्यूलेट कर लो. यूज दिस मेथड टू जनरेट एंड दिस मेथड डिमॉड्यूलेट. सो थ्योरेटिकली 4, राइट? 2c2 क्या होता है वो? 2 into 2, right? 1, 2, 3, 4, right? I mean, you can choose this as a generator, you can use any one of these as a demodulator, you can use this as a generator and this any one of these two as a demodulator. So just for fun sake, it will completely summarize our. ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया. This is the demodulation, and this is the generation. यहां से यहां क्यों गए थे हम लोग? Why we were not interested much in the filter method of generation the SSB signal? What was the problem? What was the reason? So difficult to design filter with sharp cutoff. Sharp cutoff characteristics are required. That is why we moved. So, and what is the other name of this Hilbert transform method? Signal shifting. Phase shifting. Phase shifting. And why so? So because in Hilbert transform phase shifts by pi by 2. And how many phase shifters will be required here? 2 actually. Because you don't generate two signals, because otherwise क्या होगा ना, same frequency कभी generate नहीं होता. तो इसलिए here also you will use the phase shift. So how many phase shifters will be used here? This is one phase shifter. This is another phase shifter, and one adder. So these are the two phase shifters, 2 multiplier, and 1 adder. ठीक है? So if I ask the question, how many phase shifters? 2 phase shifters, 2 multiplier block, and 1 adder or subtracting. Correct? Clear है? Yes, sir. ठीक है. So अभी तक हमने देखा कि till now we have seen that we will only transmit our signal using the one carrier. Right? What we can do, we can first bifurcate our signal into 2 components, that is in-phase component and quadrature phase component. And then we can modulate these two using 2 carrier frequencies, 2 different carriers that are quadrature in phase. And then we can add them and we can send it over the channel. And at the receiver, we can regenerate MIT and MQT in such a way that they will not interfere with each other. So benefit क्या हो जाएगा बताओ? Benefit ये होगा कि same bandwidth में you are now transmitting the double information. देखो अगर तुम्हारे MIT ऐसा है और तुम्हारा MQT कुछ ऐसा है,
ठीक है, दो सिग्नल है तुम्हारे पास, तो तुम पहले सिग्नल को यू विल मॉड्यूलेट योर सिग्नल विथ cos of with sin cos cosine, and you will modulate our second signal with the sinusoid, and then you transmit it through the air. They will both occupy the same bandwidth. Do you agree? It will be just shifted. If the bandwidth is same, it will occupy the same bandwidth, because it will also get shifted by to FC. It will be also shifted to FC. But due to the orthogonality of these two carriers, we can do something interesting here in such a way that these two signals will not interfere with each other. And here you will regenerate or demodulate, and you will get this. So one way was to, if you don't want interference, one method was to shift it to FC1 and shift the other signal to FC2 and then send, so that there is no interference. But we can do something interesting. Here, the total bandwidth occupied over the channel will be FM by this and FM by this, so 2 FM. But if we use this concept that if we use two orthogonal signals, two orthogonal carriers, then the total bandwidth occupied will be FM only, but the information content will be double. You can transmit two informations, two message signals. You understood? आप ऐसा भी कर सकते थे. Nobody can stop. Cos of 2 pi f2t. So that FC1 and FC2 are far away, and then you can use appropriate filter to filter out the this signal or this signal. ये चीज तो क्लियर हो गया था जब मैंने आपको बताया था why to use modulation, right? Yes, sir. But here we can do intelligent thing that we will use some other the quadrature carrier. And we will have this will also have the same bandwidth. They will also have the same bandwidth, but due to orthogonality of these two signals. By orthogonality, what I mean? Perpendicular. In 2D. 90 degree. Yeah, but how do you say that two signals are orthogonal? How will you? I mean, there will be some criteria, right? Two vectors are orthogonal. You take the scalar product, right? -1, which is minus half, plus half. So these two are orthogonal because their scalar product is 0. Correct? Right? Yes, sir. But if your instructor is saying that the sine and cosine are orthogonal, there must be some criteria. Right? तो जस्ट इसको अभी दिमाग में रखो. We'll see कि इसको मैंने क्यों क्वाड्रेचर तो समझ में आ गया ना. क्वाड्रेचर क्यों बोल रहे हैं इसको? सर कुछ पढ़ाया था क्वाड्रेचर वाला. क्वाड मतलब होता क्या है वैसे? क्वाड सोचो ऐसे ही बस जनरल डिस्कशन. अभी मैं नया टॉपिक तो ऐसे ही चालू करता हूँ. पहले इनफॉर्मल डिस्कशन, देन वी विल डू इट फॉर्मली. अभी सब ये सब इनफॉर्मल चल रहा है. अभी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा. तो क्वाड्रेचर का क्या मतलब है? क्वाड कुछ 1/4, राइट? क्वाड तो 4 होता है ना? यस सर. हाँ. 2 पाई डिवाइड बाई 4 क्या होगा? पाई बाई 2. तो ये कॉस है और ये साइन है. करेक्ट? क्वाड्रेचर इन फेज होते हैं क्या? क्या होता है? साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या होता है? कॉस एक्स होता है क्या?
ये तो +2 में शायद होता है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ यस यस sin pi by 2 plus theta। तो कुछ शाइन किया, कुछ दिमाग में आया, कुछ रिलेशंस है राइट, क्वाड्रेचर, pi by 2 डिफरेंस फेज, करेक्ट। सो मोटिवेशन क्या है पहले बताओ क्वाड यूज करने का, क्वाड्रेचर कैरियर मॉडुलेशन, द कैरियर्स आर इन क्वाड्रेचर राइट, pi by 2 का डिफरेंस है फेज का, that is why we are using this term quadrature, and we are using this modulation. And what is the motivation of using this modulation? We are double data transfer. double information content can be transmitted in the same bandwidth. Okay. So we will start this topic from the next class. It will be better. अभी तक SSB का मॉड्यूलेशन पढ़ लिया, डिमॉड्यूलेशन पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट में ही QCM पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना रिवाइज करना तुम लोग, जस्ट रिवाइज करना, एंड प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर रिकॉर्डिंग, हाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पुराने वाले में तो काफ़ी हम लोगों ने इनफॉर्मल डिस्कशन था ना, तो कई जगह कंफ्यूजन हो जाए। आज तो हमने सारा पहले वाला भी लेक्चर वो कर लिया राइट? यस सर। हाँ तो टुडेज रिकॉर्डिंग है सर, नोट्स भी हो सके तो। नोट्स में कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, क्योंकि मैं बार बार मिटा देता हूँ राइट। और ये हाँ फिर ऑफलाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास से आई थिंक, तो ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट राइट? यस हाँ तो क्लासरूम देखना पड़ेगा बिकॉज वी आर चेंजिंग द टाइमिंग, लेट्स सी।